Students, welcome back to my channel. Today I will continue hydrocarbon. This is from organic chemistry. So हाइड्रोकार्बन दो प्रकार होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. Saturated hydrocarbons are called alkanes and unsaturated hydrocarbons are called alkenes and alkynes. Okay, so alkane, alkene and alkyne. Saturated carbons have single bond. Unsaturated hydrocarbons have double bond or triple bond. First, alkane. The general formula of alkane is CnH2n plus 2. Okay, first you just remind with eth prop but paint. मैंने 5 नंबर तक किया, ऐसे भी लेंगे हम आगे जा सकते, लेकिन हम मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन पेंट तक हम जाएंगे. ओके, सो जनरल फॉर्मूला इज CnH2n plus 2 when n equal to 1. So this is methane. Okay, so it has single bond. This is the structural formula of methane. Then ethane, C2n equal to 2, C2H6, that is ethane. Okay, then n equal to 3, C3H8, that is propane. Then n equal to 4, C4H10, that is butane. Then n equal to 5, pentane, C5PH12. So these are all structural formula. Then alkene, double bond. This is one unsaturated hydrocarbon. It has a double bond. C general formula is CnH2n. So first number होता है n equal to 1, methane, but it is not possible. Why? You have to solve this. Why? So if you make the structural formula, you can find the bond sharing will not be satisfied. Okay, then from second number, ethene, n equal to 2, C2H4. It is also, its common name is ethylene, ethene or ethylene. It has double bond, C2H4, n equal to 3. Propene, it has also double bond, C3H6 propene, complete. Then butene, n equal to 4, C4H8. In butene, I draw two structural formula. So this is according to IUPAC name. Suppose double bond is after one carbon atom. So 1, 2, 3, 4. You should name like this. So this is but1ene. So but1ene अक्षर के बाद अगर संख्या आता है माने हाइफन हम देते हैं सब, इसलिए इसको लिखे but1ene. फर्स्ट जो but1ene को ब्यूटीन भी लिखा जा सकता है. ओके, देन यहाँ पे 2 नंबर में मैंने डबल बॉन्ड दिया, तो दिस इज but2ene 1 2. ओके, these two are the isomers of butene. In one class I have already completed isomers. You go through this and you will have a better explanation. Okay, then next one, pentene, n equal to 5, C5H10. So here also isomer possible. फर्स्ट मैंने यहाँ लगाया डबल बॉन्ड, तब ये हो गया 1 देन 2. सो 1 नंबर में डबल बॉन्ड है, तब ये क्या होगा पेंट1ene, और सिंपली इसको भी बोल सकते और पेंटीन. पेंट1ene को भी हम पेंटीन बोल सकते. ओके, देन डबल बॉन्ड इज इन सेकंड कार्बन एटम, सो दैट इज पेंट2ene. ओके, पेंट2ene अकॉर्डिंग टू IUPAC name, that is पेंट2ene. So pentene का 2 isomers possible, pent1ene and pent2ene. Then other unsaturated hydrocarbon, alkyne. General, it has a triple bond. General formula CnH2n minus 2. When n equal to 1, the bond will not satisfied because
So methyl is not possible. So I put cross mark here. Then ethyl. ethyl को हम एसिटिलीन भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम होता है एसिटिलीन. सो दैट इज व्हेन n इक्वल टू 2 C2H2. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8. So this one C2H2. So that is known as ethyl or acetylene. Then propyne, n equal to 3 C3H4. So here I put the triple bond C3H4. This is propyne. Then butane, n equal to 4 C4H6. It will have isomers. So first I put triple bond after one carbon atom. So this one but YNE, or plainly you can also write down butane. But1E, YNE or butane. Then second isomer, सेकेंड कार्बन एटम में मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगाया, तो यहाँ पर होगा ब्यूट 2YNE. सो इट हैज 2 isomers. देन पेंटाइन n इक्वल टू 5 C5H8. सो फर्स्ट मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगाया एक नंबर में, तो इन दिस कार्बन एटम. ओके, सो that one known as pent 1YNE, or simply you can also write down pentyne. Okay, then last one. So here double bond मैंने second carbon atom में लगाया 1, this one 2. So in second carbon atom you put the double bond, so this will become pent 2YNE. So these are also 2 isomers of pentyne. Okay, so today alkane, alkene, alkyne I completed with their structural formula. बच्चों ये भले इजी होता है, लेकिन एग्जाम लाइक क्वेश्चन कंटिन्यूसली एग्जाम में आता है. अगर ये बेसिक चीज तुम नहीं जानेंगे तब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. होप यू विल गो थ्रू this and will be benefited a lot. Okay, thank you.